Hello, my dear students. Joy Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester Child Development Pedagogy Unit 3 ଆମେ start କରିବା Childhood as a period of socialization. So let's start. Characteristics of childhood development tasks. First ଆମେ ଜାଣିବା childhood କ'ଣ? Okay. ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଓକେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ଓକେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଆମକୁ ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଓକେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ସୋ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ର बहुत किसी रिलेशन रोचे से विषय में जानिबा सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रोची डेवलपमेंट चाइल्डहुड टास्क पाई जानिबा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पीरियड व्हिच हैव सेपरेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स कौन ना ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट क्लासिफाइड है डिफरेंट स्टेज रे स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन 5 टाइप्स ओके पेरेंटल पीरियड इन्फेंसी चाइल्डहुड आडोलसेंस और एडल्टहुड ओके गोटे हूँ कौन ना पेरेंटल पीरियड गोटे आसो इन्फेंसी गोटे चाइल्डहुड आडोलसेंस और एडल्टहुड सो फर्स्ट आम जाना चाइल्ड डेवलपमेंट कहले कौन बुझी था इट इज द पीरियड फ्रॉम 2 to 12 years ओके चाइल्डहुड आमर जो पीरियडटा से 2 वर्ष आरंभ हो 14 वर्ष जाके ओके इट इज मार्क्ड बाय इयरली चाइल्डहुड 2 to 6 year एंड लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 year ओके जोटा कि कौन आमर स्टार्ट होता है मार्क्ड बाय 2 to 6 year देन लेटर चाइल्डहुड के ना 6 to 12 year ओके इन दिस पीरियड द चाइल्ड अंडरगो physical growth would increase in height weight which is so on study okay जो कि कौन ना आमर हाइट रे ग्रोथ होता है वेट रे ग्रोथ होता है देन द चाइल्ड शोज मसल कोऑर्डिनेशन एग्जांपल स्पोर्ट्स ओके चाइल्ड रो कौन ना मसल कोऑर्डिनेशन भी तार डेवलप होता है जो कि से एग्जांपल कौन ना से स्पोर्ट्स रे भाग नबाक लगी था ओके न्यू न्यू जिनस इनवेंट करा लगी था न्यू न्यू जिनस तार अट्राक्शन आसी था देन सोशल कल्चरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अकोर्स बाय सोशल एक्सपीरियंस ओके जो कि कौन ना सोशल रे जहाँ भी आमर एक्सपीरियंस होची सोसाइटी रे आमर जहाँ भी जेकोसी न्यू न्यू जिनस सब आम पिला जाना पाइब ता द्वारा कौन हम ना तार न्यू न्यू एक्सपीरियंस से गेन कर ओके तार इमोशनल डेवलपमेंट हम तार फिजिकल डेवलपमेंट हम तार मेंटल डेवलपमेंट हम जहाँ जोटा कि तार सोसाइटी रे सी जाना पाइब देन चाइल्ड्स मोर emotionally stable than infancy child कौन and adolescence language development increase in rapid speed child development power of thinking learning and reasoning resulting intellectual development okay basically कौन ना childhood period रे पिला मानकर धीरे धीरे ताकर thinking ability learning ability reasoning capacity okay intellectual power ए सब develop होगा को लागी था then child development physical cognitive social emotional moral and language development during childhood okay जानिबा फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट है पिलार कौन ना फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स कौन ना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द कैपेसिटी ऑफ फंक्शन ओके जेहेतु गोटे पिलार ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो तार वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी रे ग्रोथ आसो डेवलपमेंट आसो जहाँद्वारा कि कौन ना तार फंक्शन कैपेसिटी एनहांस हम ओके जेकोसी प्रकार फंक्शन ना मोटर फंक्शन इंटेलेक्चुअल फंक्शन ओके एबिलिटी फंक्शन एप्टीट्यूड सब जिनस तार कैपेसिटी एनहांस होगा लगे देन इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म okay then physical growth influenced by external and internal factor okay physical growth ना basically कहाँ से तो connection रहिबो external factor से तो रहिबो but internal factor से तो भी रहिबो then process of growth and development of human are divided into following stages कौन रोचे stages ना infancy early childhood later childhood and adolescence okay infancy early childhood later childhood और adolescence so first हमें जानिबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन ओके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और किए देथिले ना जीन पियाजेट देथिले डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और इंक्रीज इन द ब्रेन पावर ऑफ थिंकिंग पावर इज नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओके जो जिनस आम किसी चिंता करिया लगी था न्यू न्यू वे भाविबा लगी था आम ब्रेन जो इनक्रिजनेस पावर जोटा कि थिंकिंग कर कैपेसिटी आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव पावर बोली कही था ओके देन मोटर डेवलपमेंट एंड मोटर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव एंड चाइल्ड लर्न टू रन जंप एंड स्विम एक्सेट्रा ओके जितेबाला आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है आम न्यू न्यू जिनस मैंने चिंता करिया लगी था भाविया लगी था इमाजिनेशन कौन से कैलकुलेशन ओके देन मोटर फंक्शन ने कौन होता है ना आम जंप कर लगी था मोटर फंक्शन मसल्स गुड़ा डेवलप होता है से कौन कर फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है सो आम रन कर जंप कर स्विम कर ओके देन इन चाइल्ड पीरियड थ्रो
cognition development, the child can influence of learning is various skill and development. এই টাইমରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାଟି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ various skill developmentରେ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା child takes the engage himself to games and activity ଓକେ child କ'ଣ କରିଥାଏ ନା child likes to engage himself in games and activity ओके पिला निजको बहुत बहुत भल जिनस रे गेम्स रे न्यू न्यू एक्टिविटी रे ओके न्यू सब इन्वेंशन रे ताको व्यस्त रखिया को चेष्टा करि थाए देन social development comes under the influence in interest need sense of security or insecurity etc ओके सोशल डेवलपमेंट कौन ना कहा सहित माने डेवलप होता है ना आमर जो रोचे इंटरेस्ट आम नीड्स आम सेन्स आम सिक्यूरीटी आम इनसिक्यूरीटी को लेकिन ही सोशल डेवलपमेंट होता है कहीं आमको लेकिन सोसाइटी को लेकिन आमे ओके सो बोथ आर कोरिलेटेड इंटर रिलेटेड तो ये कौन हम ना आमर सेन्सनेस आमर नीडनेस ओके आमर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड आमर सिक्यूरीटी इनसिक्यूरीटी ए सब जिन आम सोसाइटी उपर प्रभाव पकेब ओके जहाँद्वारा कि कौन ना सोसाइटी डेवलपमेंट रे आमे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आमे हेल्पफुल रहूचु देन सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल ग्रोथ एंड मोरल डेवलपमेंट जदि आम सोशल एनवायरनमेंट हमको गुड मिल आम फिजिकल ग्रोथ रे आम मोरल ग्रोथ रे आम मेंटल ग्रोथ रे भी हमको साहाय्य हम बहुत गुड वाइब्स हमको आसीबो ना देन इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड कौन ना 6 to 12 years इमोशनल डेवलपमेंट इज अंडर कंट्रोल ओके एई टाइम रे कौन ना इमोशनल डेवलपमेंट अंडर कंट्रोल रे थाए एट द स्टेज चाइल्ड शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल लाइक्स हैप्पीनेस लाफिंग एंगर एक्सेट्रा ओके एई टाइम रे कहते ना पिला मानकर डिफरेंट इमोशनल स्किल हमको विभिन्न प्रकार सब नुआ नुआ जिनस हमको वेरिएशन देखिया को मिलता है हैप्पीनेस लाफिंग क्राइंग गिगलिंग ओके बहुत प्रकार जिनस एंगर there is a decrease is over experienced or emotion a child is stage is very conscious of his social practice okay and doesn't like to show his emotion directly okay ए टाइम रे कहते जेहेतु पिला टिके बड़ होबा को लागथाय 6 to 12 years so से डायरेक्टली तार इमोशन टा टिके शो करिया को टिके हिचकिचाए ओके सो से doesn't like to show his emotion directly so डायरेक्टली से इमोशन को केबे भी शो अप करिवोनी टिके ड्रामा करिवो ओके देन से शो अप करैबो देन एट दिस स्टेज चाइल्ड यूज वर्ड टू एक्सप्लेन हिज इमोशन ए टाइम रे कहते ना पिलाटी तार वर्ड को तार अस्त्र भाव में धारण करिकी ता इमोशन को एक्सप्रेस करिथाय ओके कथा रे भी से भलस भाव में बुझाई पारथाय जे मोर ए प्रॉब्लम होउची मते एमदी कष्ट बाधुची बोली ओके देन मोरल डेवलपमेंट करना ड्यूरिंग चाइल्डहुड द चिल्ड्रन थिंक एट गुड्स आर बैड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स अप्रूवल ओके ए टाइम रे कहते ना पिलाटी भाविया को लगता है कोटा ठीक और कोटा भूल ता पेरेंट्स रो अकॉर्डिंग पेरेंट्स को अप्रूवल रे पेरेंट्स ताकू जहाँ शिखई थे से हिसाब से सी जानवा को लगे जे कोटा ठीक और कोटा भूल चिल्ड्रन बिहेव मोराली टू अवॉइड पनिशमेंट ओके देन चाइल्ड आर फंक्शनेड बाय द आइडिया ऑफ गुड एंड लाइक विजिटिंग रिलीजियस प्लेस पिला मानक आमे कोन करबो ना मोराल डेवलपमेंट करिया पिला मानकर केमती ना तांको पनिशमेंट अवॉइड करबा तांको न्यू न्यू आइडियाज आ गॉड मानक विजिट सॉरी गुड थिंग्स तांको विजिट करबा रिलीजियस प्लेस ले तांको विजिट करबा ओके देन दे कैन अंडरस्टैंड द राइट और रॉन्ग इन लेटर चाइल्डहुड पीरियड 6 to 12 years ओके बेसिकली कौन ना से टाइम रे से जानवा को पाइबे जो कोटा ठीक और कोटा भूल कोटा हम पई ठीक कोटा हम पई ठीक नुहे ए सब जिंस से धीरे धीरे सिखिबा को लागिबे देन चाइल्ड डेवलप मोरल वैल्यू लाइक टॉलरेंस ऑनेस्टी एंड जस्टिस पिला मानक कौन ना मोरल वैल्यू हम सिखेबा टॉलरेंस ऑनेस्टी और जस्टिस विषय रे तांको ज्ञान देबा नियति भाबर दरकार देन लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच चिल्ड्रन एक्वायर्स और लर्न लैंग्वेज ओके पिला मानक कौन ना लैंग्वेज डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट करिया भी नियति भाबर दरकार जो कि कौन ना से ठीक भाव में निजर वर्ड को एक्सप्रेस करें निजर इमोशन को सी अन्य आगे भल से रखिपारे ओके देन लैंग्वेज डेवलपमेंट एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिव सोशल लिटरेसी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड जोटा कि कौन ना पिलार कॉग्निटिव सेंस को भी डिफर करें सोशल तार सोशल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करें ओके जहाँद्वारा कि कौन देख पिलार इंटेलेक्चुअल नॉलेज जिते ग्रो अप कर शीघ्र लैंग्वेज को एक्वायर कर बापा माँ कौन कहते से ध्यान में रखिक शिखा चेष्टा कर देन सोशल को आसला ना सोसाइटी जमी बिहेव करेंगे सोसाइटी जमी आडोर कर हिसाब से पिलाटी कौन कर लैंग्वेज को ठीक भाव में शिखा लगे देन लिटरेसी डेवलपमेंट ओके ऑफ ए चाइल्ड सो ये जिन सब होगा द्वारा कौन हम ना पिलाटी धीरे धीरे लिटरेट होगा लगे तार लैंग्वेज स्किलटा एनहांस होगा लगे देन अकॉर्डिंग टू स्मिथ एज 8 month रे पिलाटी किसी भी वर्ड कह ना 0 words 3 year रे 3-4 वर्ड्स कह 2 year रे कौन कर 272 वर्ड्स कहवाक लगे देन
4 year रे 1540 words ओके कहबाकू से लागिवो देन 5 year रे 2072 6 year रे 2562 words से कहबाकू लागिवो देन children are able to understand through language कोन ना फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट जदि पिलार ए सब फैक्टर रे डिफिकल्ट देखा जिवो तो तार लैंग्वेज डेवलपमेंट केबे भी भल से हे परबे नै कोन ना फिजिकल हेल्थ रे जदि प्रॉब्लम हैला तो पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक भाबरे हबो नै ओके देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेले पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से हबो नै देन जेंडर डिफिकल्टी ओके ता द्वारा भी एनवायरनमेंट द्वारा भी ओके देन असला चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कोन ना कल्चर एंड सोसाइटी मे मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल फॉर इंस्टेंट ओके सोसाइटी देख फास्ट खाली सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रे को होची ना जदि आम सोशियालिटी आम सोसाइटी समाज आमको ठीक भाव में माने ट्रीट करबनी ओके समाज में जब विभिन्न प्रकार तारतम्य देखा मिल कल्चरल लैक देखा मिल ओके इनस्टेबिलिटी देखा मिल तो यही सब जिन कौन आम माइंड भितर किसी ना किसी लैकअप जिनस रही द्वारा कौन हम आम भितर मैंने किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट द्वंद्व देखा मिल सो कल्चर एंड सोसाइटी माई मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल फॉर इंस्टेंट ओके कल्चर और सोसाइटी आमको विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार वे विभिन्न प्रकार रिलीजियस आमको देखा मिले ओके सो सोसाइटी मीन्स एन एसोसिएशन एंड कल्चर मीन्स द लिविंग स्टाइल ऑफ ए पीपल ओके सोसाइटी माने कौन आम कौन जानी था ना विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार स्टाइल से बसवास करते गोटे जगह सोसाइटी बोली कही था जोटा कि कौन ना सोसाइटी एसोसिएशन बा कल्चरल एसोसिएशन बोली आमे कहिता देन चिल्ड्रन ग्रो अप इन स्पेसिफिक फिजिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस विल इन्फ्लुएंस देयर चाइल्डहुड ओके बेसिकली पिलाटी कोन ना गोटे स्पेसिफिकल फिजिकल वे रे स्पेसिफिकल सोशल कल्चरल ये रे इकोनॉमिक स्टैटिक रे ओके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रे से कोन ना तार विभिन्न प्रकार सर्कमस्टांसेस को देकी से तार ग्रोन अप होता है ओके गोटे पिलाटी तार घरे विभिन्न प्रकार जिनस से देखा पाई था ओके जोटा कि सोशली इमोशनली बैलेंस करी देन कौन ना सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैन हैव ए लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन देयर डेवलपमेंट ओके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पिलार डेवलपमेंट रे लार्ज अफेक्ट पकई थाए देन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट एंड द चाइल्ड ओनली लर्न when other are there to support them like parents teacher and peer groups okay basically कौन ना पिला को आम सपोर्ट करिया दरकार केबिटी ना से नुआ नुआ जिन शिखुं कौटू ना पेरेंट्स ठारू टीचर्स ठारू पीयर ग्रुप सांग मान ठारू ओके से सब से नुआ नुआ किसी जिन शिखा लगी था नुआ नुआ जिन से लर्निंग करी चाइल्डहुड पीरियड रे देन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड सोशल डेवलपमेंट ओके कौन रोचे ना सोशलाइजेशन फास्ट हमें जानबे व्हाट इज सोशलाइजेशन व्हाट ना सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू फिट वेल इन द सोसाइटी इनटू व्हिच दे आर बोर्न ओके बेसिकली सोशलाइजेशन कौन ना एमती का गोटे प्रोसेस जो कि पिलाटी जेबे भी माने जदि जन्म होउची से सोसाइटी रे तो ताकू केमती आम सोसाइटी रे आम फिट करके रखिबा आम सोसाइटी पिला को एमती भाव में गढ़ी तोलिबा जेमती से आम सहित आक्वेंटेड होइकी सोसाइटी रे रहिकी सोसाइटी डेवलपमेंट करबा आ तार पिला सोसाइटी डेवलपमेंट सहित पिलार भी डेवलपमेंट होबाकू लागिबो ओके ताकू आम कौन कहि था ना सोशलाइजेशन बोली कहि था देन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स आसिला कंटीन्यूअस प्रोसेस मे बी विजिबल और मे नॉट बी ओके जो थ्री कौन ना कंटिन्यूअस प्रोसेस द्वारा एटा मे बी विजिबल होता है मे बी विजिबल है न था देन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर इंडिविजुअल सोसाइटी जो थ्री कौन ना गोटे बेटर इंडिविजुअल सोसाइटी मेकिंग रे हेल्प्स करता है देन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड एंड विथ डेथ सोशलाइजेशन टा कौन ना जन्म आरंभ होइकी मृत्यु रे शेष होता है सोशलाइजेशन लीड टू सोशल मैच्योरिटी ओके सोसाइटी रे केमि मैच्योरिटी आसीबो सोसाइटी रे केमि डेवलपमेंट हबो ताको सोशलाइजेशन ग्रो अप करै थाए तार कैरेक्टरिस्टिक्स आकु सब डिफर करै थाए ओके सॉरी मेथड्स मेथड्स कौन रोची ना रियल लाइफ यूज ऑफ नॉलेज ओके आम रियल लाइफ रे जो नॉलेज सब आम गेन करूँ ताकू सब आम यूज करवा देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आम शिखा आम रियल लाइफ आम विभिन्न प्रकार न्यू न्यू नॉलेज सब जाना पाइबा देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम ओके मेथड द्वारा देन एम्फासाइज ऑन सोशल डेवलपमेंट सोशल फोर्स हम ग्रुप लर्निंग हम ओके सो देन आसिला प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कौन ना प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप्स रे ओके देन primary socialization कौन it start inside the family it is the socialization of infant in the primary years of his life okay basically कौन ना socialization तो start होता था family रू फर्स्ट तार माने चाइल्ड तार मेन सोसाइटी तार फैमिली रू तार माँ को ठारू ही बाबा को ठारू ही स्टार्ट होता है ओके देन
In this, the infant learn language, cognitive skill, norm and value of the family. Okay, family रे कौन है ना सोसाइटी रो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाए जो कि पिलाटी तार कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करता है, तार नॉर्म्स और वैल्यू को से धीरे धीरे शिखा को लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है. ओके, से टाइम रे तार हवा को लगी था कौ टाइम ना इनफेंट टाइम रे. ओके, देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौन, इट स्टार्ट आउटसाइड द फैमिली लाइक द पीयर ग्रुप्स और स्कूल. ओके, सेकेंडरी सोशलाइजेशन टा तार माने हाउस रो आउटसाइड रो स्टार्ट होता है जोटा कि तार स्कूल रु तार पीयर ग्रुप्स रु. ओके, तार कलिग्स तार एनवायरमेंट रु. देन चाइल्ड लर्न इंपोर्टेंट सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर ग्रुप. ओके, तो सांग साथी ठारू से बेसी किसी जिन जाना पाई थाए. इट इज कंटिन्यूअस थ्रू द रेस्ट ऑफ लाइफ. एटा भी होची कंटिन्यूअस थ्रू द रेस्ट ऑफ लाइफ. ओके, देन conflict resolution and social development करो now. It is a constructive approach that enable people to find peaceful solution to disagreement among them. ओके, कॉन्फ्लिक्ट बेले बेले कौन ना सोसाइटी आमको किसी तारतम्यता किसी द्वंद्व देखा मिलता है. ओके, जोटा कि कौन ना एथिरे कौन होता है, इट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आमको न्यू न्यू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच माने ये मिलता है जो कि कौन ना आम पीसफुल सॉल्यूशन डिसएडवांटेजेस को खोजी पारिबा ताकू माने डिनाय करि पारिबा. देन द रिड्यूस एंगर स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग पीपल जो कि कौन ना लोक मानकर एंगर स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन ओके सब को आम रिड्यूस करि पारिबा. देन प्रोटेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन. ओके, कौन एडवांटेजेस सब रोचे, एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ता द्वारा कौन होता है ना प्रोटेक्ट होता है पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन को. ओके, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन अमंग द ग्रुप पिला माने ग्रुप भितर कौन ना कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है. हेल्प टू द पर्सन टू एडजस्ट इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. ओके, जिते किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट आसी थाए से हिसाब से कौन होता है ना लोक मान भितर किसी ना किसी न्यू न्यू टॉपिक ऊपर डिस्कशन होता है जहाँद्वारा कि कौन ना न्यू न्यू सब आइडिया जेनेरेट होता है जहाँद्वारा कि माने प्रति लोक निज पर्सनालिटी को कौन करते ना प्रोटेक्ट करने को लगी था से भितर कोऑर्डिनेशन माने स्ट्रांग होता है इंक्रीज होता है. देन आ कौन है ना एडजस्टिंगनेस आसी जाता है. ओके, सो एडवांटेजेस तार तो एति रहिला. देन स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट जानिबा. ओके, सोशल डेवलपमेंट पॉजेस थ्रू ए नो नंबर ऑफ मार्क स्टेजेस व्हिच में डिस्कस्ड आज कौन ना आइसोलेटेड प्ले, social play, how parallel play. Okay, isolated play means it comes under stage or pre-social behavior. Okay, sometime it is called solitary play or independent play it in this stage. Okay, basically isolated play रे कौन होता है ना माने एटा अंडर स्टेज रे आसुची जोथरे कि कोन ना पिला माने सॉलिटरी प्ले करथांती माने एकुटिया से माने सोसाइटी रे माने गोटे ये माने आइसोलेशन भाबरे रही कि निजो को ग्रोन अप करिथांती. इन दिस स्टेज द इन्फेंट प्लेज एलोन फ्रॉम एज 0 to 2 years जोथरे कि कोन ना पिला माने जेतले जन्म रु 2 years जाके थांती से माने निज भीतर ही खेलिया को लागि थांती. ओके, तांको के सांग दरकार न थांती बट से तांको निज भीतर माने निज भीतर से निजे खुशी होबा को लागि थांती निज भीतर से खेलिया को लागि थांती निज भीतर से निजो को खोजु थांती. ओके, देन parallel play कौन ना when the child plays alongside or near others but does not play with them, this stage is called parallel stage. 3 to 4 year child. ओके, ये टाइम रे कौन ना पिला माने खोजुथिबे का सहित खेलिया को बट के खेलिया को मिल नथि. ओके, सो सेटा होची parallel plays. ओके, देन असला कौन ना social plays. in this stage the child play with peer groups, the age is called gang age. ओके, जोथरे कि ताको फाइनली सांग माने मिली जानी ताको खेलिया पई. ओके, देन आइसोलेटेड प्ले रे से एका खेलिबो आ देन parallel play रे ताको माने से चाहुतबो खेलिया को बट ता सहित के खेलिबेनी हैला. देन सोशल प्ले रे कौन हबो ना पिला को सांग साथी सब मिली जिवे सो से खुशी है कि डेइबो. देन असला हमरो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मैच्योर पर्सन कौन ना सो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड. ओके, मैच्योर पर्सन मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स केमतिया ना जेमितिका सिचुएशन थी से हिसाब से बिहेवियर को शोज अप करेंगे. देन एडजस्टमेंट विथ फेलो मेंबर्स फेलो मेंबर सहित कौन ना एडजस्टमेंट रहिबे. परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन निज सिटीजन ड्यूटी को से निर्वाह करेंगे. एबल टू टेक डिसीजन एंड प्रॉपर एक्शन इन क्रिटिकल सिचुएशन. ओके, से एबल थे डिफरेंट क्रिटिकल सिचुएशन से प्रॉपर एक्शन को मेंशन करि परिबे प्रॉपर एक्शन से नहीं पारिबे.